In this video, we will see about scaffold design and fabrication. Scaffold design and fabrication is an important aspect of tissue engineering that involves the certain um, that involves the creation of three-dimensional 3D structure that serve as a temporary support for cell growth and the tissue development. The scaffold provide uh, the scaffold provides supportive microenvironment for cell to adhere, proliferate, and differentiate into the functional tissue. So, the scaffold design fabrication also the creates thing 3D structure of 3D structure three-dimensional structure that's serve as a temporary मतलब जो 3D structure development होगा वो ऐसा serve करता है serve करता है for cell growth and development tissue development के लिए help करता है. The scaffold provide supportive microenvironment for cell to adhere and cell to adhere and proliferate and differentiate into functional tissues. The scaffold provides करता है supportive microenvironment provide करता है to cell to adhere, proliferate, differentiate into functional tissues. Scaffold design refers the a process of creating the ideal structure for the scaffold. Scaffold design refers the process for creating ideal structure for the scaffold, taking into consideration the desired मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कंसिडर्ड डिजायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है उनका कंसिडर किया जाता है जिस तरीके से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कराना चाहते हैं फ्रॉम द स्कैफोल्ड बायोकम्पैटिबिलिटी एंड द डिग्रेडेशन रेट जो स्कैफोल्ड का बायोकम्पैटिबिलिटी भी देखा जाता है एंड देन द लास्ट टर्म इज डिग्रेडेशन रेट how fast it will be degrade or how much time it will take to degrade the mechanical properties. The mechanical properties of scaffold should match those of mechanical properties of the scaffold should match those of the target tissue and the degradation. मतलब जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा ये टारगेट टिश्यू को मैच करना चाहिए इसका प्रॉपर्टीज एंड द डिग्रेडेशन रेट शुड बी सच दैट द स्कैफोल्ड इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द न्यूली फॉर्म टिश्यू जो स्कैफोल्ड का डिग्रेडेशन रेट शुड बी द सच दैट इतना होना चाहिए ताकि स्कैफोल्ड जो ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द न्यूली फॉर्मेड टिश्यू की तरह रिप्लेस हो जाए. द biocompatibility of the scaffold. The biocompatibility of the scaffold is critical to prevent any desired immune response or toxicity. जो biocompatibility होता है और scaffold is critical होता है to prevent any desired immune response or toxicity. Scaffold fabrication refers to the actual process of creating the process scaffold structure. Fabrication would refer the actual process of creating 3D structure. There are various methods of scaffold fabrication. First is electrospinning. This method involves the creation of fine fibers from the polymer solution that is electrostatically spun into the non-woven mesh. तो यहाँ पे पॉलीमर से फाइबर बनाया जाता है फाइन फाइबर फ्रॉम पॉलीमर सॉल्यूशन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्पून इनटू द नॉन वोवन mesh. 3D printing. This methods involve the deposition of a material layer by layer using 3D printer, creating a 3D structure. Material का by layer deposit किया जाता है तो printer 3D तो layer का deposition होता है तो using 3D printer and creating 3D structure. Soil gel methods. This method involve the creation of gel from solution which is then dried to form scaffold structure. इसमें क्या होता है जेल का और उसमें क्रिएशन ऑफ जेल का सोल्यूशन से जेल का फॉर्म क्रिएशन किया जाता है जेल बनाया जाता है विच इज़ देन डिजायर फॉर्म स्कैफोल्ड उससे फिर जेल से फिर डिजायर फॉर्म जो जिस तरीके हम लोग स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो डिज़ाइन किया जाता है वो बनाया जाता है. Particulate leaching. This method involves the creation of scaffold structure by embedding particles
in matrix, particulate leaching. These methods involve the creation scaffold creation किया जाता है by embedding particles in matrix. Embedding particles in matrix में use particles का use करके scaffold डिजाइन किया जाता है in simple word, which is then leached away to create in interconnected pores, which is then फिर इसको leached किया जाता है away to create interconnected pores. So different methods can be used for different type of structure, different type of structure फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट तरीके के 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. Once the scaffold is fabricated, it can be seeded with cell or biologically active molecules to initiate tissue growth. जब एक बार scaffold बन जाए तो उसके बाद हम लोग सेल का सीड कर सकते हैं फॉर बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल एंड सेल और बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स को सीड कर सकते हैं to initiate tissue growth and development. The scaffold should provide appropriate biochemical signal एंड फिजिकल सपोर्ट फॉर सेल ग्रोथ. जो स्कैफोल्ड होगा उसको स्कैफोल्ड चाहिए कि वह अप्रोप्रिएट जो बायोकेमिकल एंड सिग्नल एंड द अप्रोप्रिएट फिजिकल सपोर्ट एंड बायोकेमिकल सिग्नल प्रोवाइड सपोर्ट देना चाहिए अप्रोप्रिएट, ताकि सेल ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल टिश्यू. तो ये सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू कैन further proceed. In conclusion, we can say scaffold design and fabrication is an essential aspect of tissue engineering that involve creating a supportive structure for cell growth and the tissue development. जो scaffold design fabrication essential होता है in the aspect of tissue engineering to involve the creating a supportive structure for cell growth and development, tissue development. The design and fabrication of the scaffold should take into consideration the desired mechanical properties, biocompatibility. जो हम लोग जब फैब्रिकेट करते हैं, फैब्रिकेशन होता है स्कैफोल्ड को, उस टाइम पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. कंसिडर मतलब योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, डिजायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उस मटेरियल का बायोकम्पैटिबिलिटी एंड डिग्रेडेशन रेट टू अचीव सक्सेसफुल टिश्यू इंजीनियरिंग. एक सक्सेसफुल टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए इन तीनों चीज़ों का कंसंट्रेशन ध्यान में रखना पड़ता है. So this is all about the scaffold design and fabrication.